विद्यार्थियों, 9वीं कक्षा की हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आज तुम लोगों के साथ आलोचना करने जा रही हूँ तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत आप भले तो जग भला नामक पाठ को लेकर। और इस पाठ के लेखक है श्री मन नारायण जी। और इस पाठ में कैसे जीवन ढंग से जिया जाता है उसी को लेकर चर्चा की गई है। तो लेखक ने अति सुंदर रूप से यहाँ इस बात की उपस्थापन किया है कि शिष्टाचार क्या होता है और जीवन में को कैसे जीने से हमें सुख शांति प्राप्त होती है। तो आओ देखें पाठ में क्या है। प्रस्तुत पाठ अत्यंत भाव गंभीर तथा हृदय स्पर्शी है। इस पाठ में जीवन जीने की एक दृष्टि दी गई है। लेखक ने विभिन्न दृष्टांतों, प्रसंगों और उदाहरणों द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया है कि यदि मनुष्य स्वयं भला है तो उसे सारा संसार भला ही दिखाई देता है। भला होने के से आशय है सदैव दूसरों की अच्छाइयों को देखना, अपने अवगुणों पर भी ध्यान देना और हर परिस्थिति में खुश रहना, अपने निंदक का भी एहसानमंद होना और प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम और नम्रतापूर्ण व्यवहार करना। तो लेखके पाठটোত কি কৈছে, পাঠটো অতি ভাৱ গম্ভীৰ বুলি কোৱা হৈছে আৰু হৃদয় স্পৰ্শ কৰা। আৰু পাঠটোত কি কৈছে, জীৱন আমি জীৱনটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে বা কি ধৰণে জীয়াই থাকিলে ভাল হয় তাৰ ওপৰত এটা ধুনীয়াকৈ বিভিন্ন উদাহৰণ প্ৰসংগ আৰু কি কৈছে দৃষ্টান্তৰ সহায়ত আমাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে লেখকে। আৰু এটোৱে কোৱা হৈছে যে আপ ভালে তো জগ ভালা, আপ বুঢ়ে তো জগ বুঢ়া। যদি তুমি নিজে ভাল হোৱা তোমাৰ কাৰণে গোটেই সংসাৰখনেই ভাল। আৰু এই কথাটোকে আলম হিচাপে লৈ কৈছে যে আমি কি কৰিব লাগে, আমাৰ দুখ আনৰ দুখ খুচৰিব নালাগে, নিজৰ দুখবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, আনৰ ভাল গুণটো আমি চাব লাগে আৰু আনৰ বদনাম গাব নালাগে, সেই কথাটো কৈছে। আৰু প্ৰত্যেক পৰিস্থিতিতে প্ৰতিটো পৰিস্থিতিতে কি হ'ব লাগে, আনন্দ মনেৰে থাকিব লাগে। আৰু আনে তোমাৰ কথা যদি কিবা কৈছে বা নিন্দা কৰোতাজনক কি ক'বলৈ সদায় ধন্যবাদহে দিব লাগে। আমি আহাচোন আমি পাঠটোত কি আছে চাওঁ। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वो चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वो भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उन पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। तो यहाँ एक कुत्ते की कहानी को बताया गया है कि एक कुत्ता एक कांच के महल में घुस जाता है। माने এটা কুকুৰ কি হয়, এটা কাঁচৰ মহলত সোমাই যায় আৰু যেতিয়া চাৰিওফালে কাঁচবিলাকত নিজৰে প্ৰতিবিম্বটো দেখা পায় তেতিয়া কুকুৰটোৱে কি হয় ভাবে যে ইয়াত বহুত কুকুৰ আছে আৰু তাৰ ওপৰত তাক সেইবিলাকে মাৰি পেলাব বা জপিয়াব তাৰ ওপৰত, এনেধৰণে ভাবি লয়, মনতে ভাবি লয় আৰু কি কৰে সি ভুকিবলৈ ধৰে, নিজকে মানে ডাঙৰ দেখাবলৈ সি খুব জোৰেৰে ভুকিবলৈ ধৰে। আৰু সেই যে ভুকে সেই তাৰ যিটো শব্দ হয় সেই তাৰে প্ৰতিধ্বনি তাৰ কাণলৈ উভতি আহে আৰু কি হয় उसका दिल धड़कने लगा। আৰু সি মনতে তাৰ কি হ'ল খুব ভয় লাগিল আৰু কি হ'ল তাৰপিছত আৰু জোৰেৰে ভুকিবলৈ ধৰিলে। তাৰপাছত শেষত গৈ কি হ'ল গোটেই কুকুৰবিলাকে যেতিয়া সেই আৱাজটো উভতি আহে আৰু প্ৰতিবিম্বটো সি যিহেতু দেখা পাইছে, বহুত কুকুৰৰ প্ৰতিবিম্ব সি দেখিবলৈ পাইছে আৰু তেতিয়া সেইবিলাকক বহুত কুকুৰ বুলি ভাবি লৈছে যিহেতু, আৰু সেইবিলাকে তাৰ ওপৰত জঁপিয়াইছে এনেধৰণে ভাবিছে। সি যেতিয়া সিহঁতৰ ওপৰত জঁপিয়াইছে, প্ৰতিবিম্বটোৱে তাৰ ওপৰত জঁপিয়াইছে আৰু বেলেগ কুকুৰ বুলি সি আৰু জোৰেৰে চিঞৰিবলৈ ধৰিছে, জঁপিয়াবলৈ ধৰিছে আৰু শেষত গৈ খুব চিঞৰিছেও আৰু শেষত গৈ সি বেহুচ হৈ পৰি গৈছে। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती हुई दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ
और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दूम हिलाते बढ़े। वो प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। तो यहाँ एक कुत्ता जो है दूसरों पर झपटा और एक समय में वो जोर जोर से चिल्लाकर गिर पड़ा। लेकिन यह दूसरा कुत्ता भी आया जिसने देखा कि चारों तरफ बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन उसने अपना दुम हिलाया और खुशी से वहां से चला जाता है। फिर तो কি কৈছে ইয়াত যে দ্বিতীয়টো কুকুৰ আহিছে, যেতিয়া সি কি কৰিছে সোমাইছে কাছৰ মহলটোত, আৰু তেতিয়া সি চাৰিওফালে যেতিয়া প্ৰতিবিম্ববিলাক দেখা পাইছে, তেতিয়া সি কুকুৰবিলাকে যেতিয়া সি নিজৰ নেজডাল লৰাইছে, কুকুৰবিলাকে সিহঁতৰ নেজডাল লৰোৱা দেখিছে সি, আৰু তেতিয়া সি আনন্দত কি হৈছে নিজৰ নেজডাল হিলাই হিলাই সিহঁতৰ ফালে গৈছে, বা সেইভাগে সি কি কৰিছে তাতে আনন্দ লভিছে, আৰু কি কৰিছে খুব প্ৰসন্নতাৰে আনন্দিত মনেৰে অচল কোট কৰি মানে জপিয়াই কপিয়াই সি শেষত নিজৰ ছায়াটোৰ সৈতে খেলিছে, আৰু শেষত আনন্দিত মনেৰে তাৰ পৰা নেজ হিলাই হিলাই বা নেজ লৰাই লৰাই গুচি আহিছে। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। मैं उनकी मिसाल भूखने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। तो लेखक का कहना है कि वह उसका एक मित्र है जो हमेशा परेशान रहता है, नाराज रहता है, और चिड़चिड़ापन जो है उसके बारे में कही गई है कि लेखक इन दो जो भूखने वाले कुत्ते थे, जो एक थे उसमें से एक थे भूखने वाले कुत्ता, जो उसके साथ उसका मिसाल नहीं देना चाहता। ये लेखके কি কৈছে যে মই তেওঁৰ লগত তাৰ তুলনা কৰিব বিচৰা নাই। এই যে যিটো কুকুৰে ভুকিছিল, বেছিকৈ ভুকিছিল আৰু শেষত গৈ সি পৰি গৈছিল, সেই কুকুৰটোৰ লগত তুলনা কৰিব বিচৰা নাই, এইটো অশিষ্টাচাৰ হ'ব। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে মিত্ৰজন কেনেকুৱা আছিল, খুব চিন্তিত হৈ থাকে, খুব খঙাল আৰু বৰ খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ, আৰু তেওঁ কি কৰে সেইকাৰণে কৈছে যে এই খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ মানুহজনৰ কথা ভাবি বা মিত্ৰজনৰ কথা ভাবি লেখকৰ এই দুটা কুকুৰৰ উদাহৰণ দিবলৈ মন গৈছে বুলি কৈছে, আৰু মনলৈ তেওঁ আহিছে, আৰু শেষত কৈছে কি কিন্তু এই কুকুৰকেইটাৰ কাহিনীৰ পৰা তেওঁ বহু কথা শিকিব পাৰে বা কিছু শিক্ষা পাব পাৰে। दुनिया कांच की महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों को और ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। तो लेखके কি কৈছে যে দুনিয়া কাঁচকে महल जैसी है, কাঁচৰ মহলৰ দৰে, তোমাৰ স্বভাৱৰ ছায়া বা মানুহৰ স্বভাৱৰ ছায়াই তাত পৰে বুলি কৈছে। নিজে যদি ভালে থাকা তোমাৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীখনেই ভাল, আৰু তুমি যদি বেয়া তোমাৰ কাৰণে পৃথিৱীখন বেয়া। তুমি যদি প্ৰসন্ন চিত্ত বা কি কৈছে আনন্দিত মনেৰে আনৰ দুখবিলাকক এৰি বা আনদেখা কৰি কি কৰিব লাগিব, তুমি তেওঁলোকৰ গুণৰ প্ৰতি ধ্যান দিব লাগিব, আৰু কি কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ আৰু কৰিব লাগিব তুমি নম্ৰতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ, মৰম আৰু নম্ৰতাৰে যদি তুমি তেওঁলোকৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা, তেতিয়া কি গোটেই পৃথিৱীখনে তোমাৰ কাৰণে ভাল বুলি लेखके ক'ব বিচাৰিছে। अगर आप हमेशा लोगों के एवं को और देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से किसी दूर जंगल में चले जाना ही हितकर रहेगा या होगा। लेखके কি কৈছে যদি আপুনি সদায় নিজৰ বা আনৰ দুখবিলাকে খুচৰি থাকিবলগীয়া হয় বা খুচৰে, তেতিয়া কি হ'ব, সকলোৱে আপোনাক কি বুলি ভাবিব, শত্ৰু বুলি ভাবিব, আৰু কি হ'ব তেওঁলোকক যদি আপুনি কুকুৰটোৰ লগত উদাহৰণটো টানি কৈছে যে ভোকা কৰে, মানে তেওঁলোকক আপুনি ভুকিবলৈ ধৰে, সকলো সময়তে ভুকি থাকে বা কৈ থাকে, তেওঁলোকৰ দুখবিলাক দেখুৱাই থাকে, তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকো আপোনাৰ ফালে খঙাল দৃষ্টিৰে আহিব বা খং কৰি বা তেওঁলোকক ভুকিব, সেই কথাটোৱে কৈছে। আৰু কৈছে যে ইংৰাজীত এটা প্ৰবচন আছে, কি আছে যে যদি আপুনি হাঁহে গোটেই পৃথিৱী আপোনাৰ লগ দিব, আৰু যদি আপুনি কান্দে বা আপোনাক খঙে কৰিবলগীয়া আছে, তেতিয়া আপুনি বহু দূৰৰ এখন জংঘললৈ গৈ তাত কান্দি থকাই ভাল, তাত খং কৰি থকাই
ভাল, কোনেও আপোনাক লগ দিব নিবিচাৰিব। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। अमेरिका के मशहूर नेता वो अब्राहम लिंकन के बारे में हम जानते हैं, जो अपनी साधना और लगन के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर अधिष्ठित हुए थे। और उसको पूछा गया, क्या पूछा गया, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, আপোনাৰ সফলতাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰহস্য কি। उसने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। तो मैं आनर কি নকৰোঁ, অনাৱশ্যকীয় আলোচনা নকৰি, আনৰ সমালোচনা নকৰি মই কি কৰোঁ, মই তেওঁলোকৰ অন্তৰত আঘাত নিদিওঁ। মই আনৰ সমালোচনা কৰি মই তেওঁলোকৰ অন্তৰত আঘাত নিদিওঁ বুলি ক'লে। मेरे मित्र की यही खास गलती है, वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों को, कामों को, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सिर्फ जहर के। तो मित्रजনৰ যিহেতু প্ৰসংগ টানি আনিছে লেখকে, বিশেষকৈ মিত্ৰজনৰ কথাৰে, মিত্ৰজন কেনেকুৱা খঙাল প্ৰকৃতিৰ আৰু কাৰো লগত তেওঁ নপতে। আৰু সেইকাৰণে কৈছে মিত্ৰজনৰ প্ৰধান ভুল এইটোৱেই, কি কৈছে, তেওঁ আনৰ দৃষ্টিকোণ, আনৰ যি দৃষ্টিভংগী সেইবিলাক তেওঁ বুজিবলৈ যত্ন নকৰে। আনৰ বিচাৰবিলাক, আনৰ কামবিলাক বা আনৰ ভাৱনাবিলাকক আলোচনা কৰিয়ে ভাল পায়, আৰু সেইটোৱে তেওঁ পৰম ধৰ্ম বুলি ভাবে। और हिकाने কৈছে उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है। आनक सुधार बा आनक সংস্কাৰ কৰিবলৈকে যেন তেওঁ পঠিয়াইছে, তেওঁ তেনেকৈ ভাবে হয়তো। আৰু হিকানে কৈছে তেওঁটো পাহৰি যায় হয়তো যে 1 কেজি জহৰতকৈ মানে বিষতকৈ 1 গুণ এটুপাল মৌ शहद মানে মৌৰ বেছি মূল্য আছে। दुनिया में पूर्ण मौ माने मीठा, आमार कथाটো ক'ব বিচাৰিছে मौ माने मीठा और कटु कथा माने जहर, এই কথাটো এই দুটা কথাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। दुनिया में पूर्ण कौन है, हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती है, प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती है, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसा ईशा ने कहा था, लोग दूसरों को की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी ही आंख के सहतीर को नहीं देखते। तो दुनिया सम्पूर्ण कोन, लेखके कब विचारिছে যে দুনিয়াতনো পৃথিৱীখনত সম্পূৰ্ণ কোন, কোনোৱে সম্পূৰ্ণ নহয়। প্ৰত্যেকৰে কিবা নহয় কিবা এটা ভুল থাকে বা এটা মানে দুখ থাকে, যে কোনো সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কয় আৰু প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে কি কৰে, ভুল কৰিব পাৰে। আৰু কি কৈছে, সেইকাৰণে এজনে আনজনক শুদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন নকৰাটোৱে ভাল, মানে আনৰ দুখ খুচৰি নথকাই ভাল, এই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছে। আৰু সেইকাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টই কোৱা কথা এষাৰ মানে উদাহৰণ হিচাপে দিয়া হৈছে যে আমি কি কৰোঁ, মানুহে কি কৰে বুলি কৈছে, তিনকা মানে সৰু এডাল খুঁটা আৰু ছাতিৰ মানে ডাঙৰ ঢেঁকীৰ থোৰাৰ দৰে ডাঙৰ লাঠি। আৰু কি কৈছে, আমি কি দেখোঁ, আনৰ চকুৰ সেই অকণমানি খুঁটাডালো আমাৰ চকুত পৰে। মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে আনৰ আমি সৰু ভুলটো আমাৰ চকুত পৰে, কিন্তু নিজৰ সন্মুখতে থকা চকুৰ আগত থকা ডাঙৰ লাঠি এডালো আমাৰ হয়তো চকুত নপৰিব পাৰে। মানে নিজৰ দুখবিলাক আমাৰ চকুত নপৰে, আনৰ দুখবিলাক আমাৰ চকুত পৰে আৰু নিজৰ দুখবিলাক হয়তো চকুত নপৰে। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्श पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। এতিয়া কি কৈছে, মিত্ৰ যিহেতু খিংখিঙীয়া বা আনৰ লগত নপতে, কাৰো লগত মিলিব নোৱাৰে, সেই কথাটোৰ কথা, স্বভাৱটোৰ কথা কৈছে যে আনক যদি শিক্ষা দিবলৈ সকলো সময়তে আমি শিক্ষাই দিব বিচাৰি থাকোঁ, নিজৰ আদৰ্শবিলাকৰ ওপৰত আমি নিজেই অমল নকৰোঁ বা নিজেই তাক অনুকৰণ নকৰোঁ, বা নিজৰ জীৱনত নখটুৱাই আনকে উপদেশ দিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ কি হ'ব, আনক সংস্কাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি কৰিব লাগিব, সেই মিত্ৰজনৰ দৰে অকলশৰীয়াই হৈ থাকিব লাগিব। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे की अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़े तो। मेरे मित्र अपनी बुराई की आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहे।
কি কৈছে এই সন্দৰ্ভতে इसी सिलसिले में एक बात और लेखक ने कहा है कि এই সন্দৰ্ভতে আৰু এটা কথা কওঁ কি কৈছে যে আনৰ যি দুখৰ সমালোচনা আমি কৰোঁ যদি আমি নকৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব যদি সেইবিলাকে তোমাৰ দুখবিলাক খুচৰি থাকে তেতিয়া কি হ'ব এই কথাটো কৈছে তুমি যদি নকৰা তুমি নকৰাও যদি তথাপিও তোমাৰ যদি দুখবিলাক আনে খুচৰি ফুৰে তুমি কি কৰিবা আৰু তেতিয়া ইয়াত এটা কথা কৈছে যে আৰু মোৰ মিত্ৰই কি কৰে লোকৰ যি লোকে যদি তেওঁ দুখবিলাক খুচৰিবলৈ যায় বা কিবা ভুল বুলি কয় তেতিয়া তেওঁ খঙত অগ্নিশৰ্মা হয় আমি পাইছোঁ আগবগলা শুনা মানে খঙত অগ্নিশৰ্মা হোৱা আৰু ভলে হি वा दुनिया के दिन भर बुराई करते रहे আৰু লাগিলে হি তেওঁ কি কৰে গোটেই দিনটো আনৰে बुराटो বা বেয়াটো বিচাৰি নুফুৰক লাগে इस पाठ्यांश में हमको क्या मिला कि अगर आप खुद ही भले हो तो सारा संसार आपके लिए भला ही होगा और अपने व्यवहार में कुछ गलतियां है तो दूसरों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए यानी यहाँ लेखक का कहना है कि दूसरों के दोषों को दूसरों से ज्यादा उनके गुणों के प्रति ध्यान देना चाहिए प्रेम और नम्रता के साथ पेश आना चाहिए और प्रसन्नचित्त होकर दूसरों को भी प्रसन्न करना चाहिए क्योंकि एक सेर जहर से ज्यादा अच्छा है कि एक बूंद शहद तो इतनी सी बातें हमें इस पाठ्यांश में मिली अगले पाठ्यांश में हमको और सारी बातें मिलने वाली है तो लेखक ने यहाँ बड़ी सुंदर रूप से हमें समझाने का प्रयास किया है कि कैसे जिंदगी जिया जाता है और कैसे जिंदगी जीने से हमें सुखी जीवन की प्राप्ति होती है तो विद्यार्थियों आशा करती हूँ पाठ का ये अंश तुम लोगों को समझ में आया होगा और अगली पाठ्यांश लेकर मैं तुम लोगों के बीच फिर आऊंगी आज के लिए यही सही धन्यवाद।